हेलो गाइस, वी आर सो बैक एट द स्ट्रीम। आज है हमारा डे 4 एंड आज हम कुक करने वाले हैं। सॉरी यार, क्या बोल दिया मैंने, वाह फंबल हो गया। आज हम कुक करने वाले हैं हैशिंग को। आज हम हैशिंग को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। सो या एक कमेंट कर देता हूँ मैं। एंड आज हम कुक करने वाले हैं। सॉरी यार, क्या बोल दिया मैंने, वाह फंबल हो गया। आज हम कुक करने वाले हैं हैशिंग को। आज हम हैशिंग को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। सो या एक कमेंट कर देता हूँ मैं। एंड आज हम कुक करने वाले हैं। सॉरी यार, क्या बोल दिया मैंने, वाह वाह भाई, मैं तो बहुत आज हम अरे कुक अच्छा, मेरे करने को वाले पता हैं चला हैशिंग कि को। थोड़ा जल्दी स्ट्रीम स्टार्ट करना होता आज हम हैशिंग को छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। है। सो हाँ, या एक कमेंट कर देता हूँ मैं। एंड आज हम एडिट कर सकते हैं नहीं ना, कुक करने गुड। वाले हैं। सॉरी यार, क्या बोल दिया मैंने, वाह वाह भाई, मैं तो बहुत आज हम अरे कुक अच्छा, मेरे करने को वाले पता हैं चला हैशिंग कि को। थोड़ा जल्दी स्ट्रीम स्टार्ट करना होता आज हम हैशिंग को है। ओके फाइन। सो या लेट्स स्टार्ट आवर हैशिंग। जिसको भी डाउट है, लाइक मैं अलग विंडो पे यूट्यूब देखता हूँ। आई नेवर नो कि स्ट्राइबर कॉपीराइट वगैरह मार दे। लाइक आई डोंट थिंक मारेगा, बट व्हाई नॉट, व्हाई टेक द रिस्क। Hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So this is yet another lecture from the Strivers A to Z DSA course, and this is India's most in-depth DS algo course. Why do I say that? Because you can check out all the free courses, all the paid batches. You will not find any courses, any batches with भाई पानी पिया करो, 455 modules or पानी कोई नहीं पीता। 455 problems solved in it. This is the reason I'm saying that this is India's probably world most in-depth DS algo course. In the previous lectures, we have covered till step 1.5. In this lecture, we will be covering basic hashing. Once I cover this, we will be covering everything related to basics that we require in order to start with DS algo. So without waiting, let's get started with the hashing lecture. So we're solving a lot of interview problems, isn't it? But whenever you go for interviews, the first round will always be coding round. So in order to clear that coding round, you have to actually give a lot of similar coding rounds in your preparation. So one such coding round is you go and be using pseudocode. So language is the link in the description. Make sure you go and register and participate in such contests because this will help you in your preparation journey. So without waiting, let's get back to the video. Now, when I talk about hashing, it's one of the most important topics in DS algo. If you do not understand hashing, you will not be able to solve a lot of problems in data structures and algorithms. So please do not miss this lecture because I'm going to teach you hashing and I'll be using pseudocode. So language will not matter. Everything that I'll be teaching will be in terms of pseudocode because for loops are similar in C++, similar in Java and Python. So once you understand the pseudocode, once you understand the concept, you can actually code it in any of the languages that you are following this particular course in. So in order to understand hashing, let's take initial problem. Imagine you're given this particular array and now suddenly I come up and say, hey, can you tell me how many times does 1 appear in the array? And you can say that, hey, 1 appears twice in the array, right? Because 1 is appearing once here and 1 is appearing once here. So 1 appears twice in the array. And again come up and say, hey, can you please tell me how many times does 3 appear in the array? Now you'll be saying 3 appears once. Now imagine I again come up and say, hey, can you tell me how many times 4 appears in the array? You'll be saying it doesn't appear in the array. Now imagine I again come up and say, hey, can you tell me how many times does 2 appear in the array? You'll be like, 2 appears twice. Imagine I again come up and say, hey, how many times does 10 appear in the array? You'll be like, hey, listen, 10 doesn't appear in the array. So 10 is appearing 0 times. So given an array and you're asked a lot of times, very, very important points, very, very important point. You're asked a lot of times. First, you might be asked for any given number, then any other number, then again the same number. You could be asked for any given number of times for any number, and they might ask you how many times it appears, and you have to tell. Now, what is the first approach that comes to your mind when you think about it? Because you know for loops, right? The first approach that comes up is, hey, if someone says the number is 1, the first approach that comes up to my mind is, I will iterate through the entire array. What I'll do is I'll take this 1 and I'll compare it with the first guy, 1, and I say yes. And I'll take a counter variable which is 0. I'll say this is equal to this. So I update it to 1. Next, I'll go to 2 and I'll say, is this equal to 1? I'll say no. Next, I'll go to 1 and I'll say, this is equal to this. So the counter which was 1 previously will be updated to 2. Next, I'll go to this and I'll say, is this equal to this? No. Next, I'll go to this and I'll say, is this equal to this? And no. So the counter stays at 2. So if I have to write the brute force method in order to find how many times it appears, can I say it will be a function which takes a number
I'm writing a plain pseudocode. It will be a function which takes a number and probably an integer function because it has to return how many times it appears. And you can be like for loop int I, or rather, you also need the array in the function. So go ahead and take the array as well. Int function and probably array. Again, I'm writing the pseudocode, guys. I'm just writing the pseudocode. Please focus on the logic. So can I say, probably I'll take a counter equal to 0 and I'll say for I will loop from 0 and I'll loop till the last of the array. You already know this. How do you loop in the array, right? And you will say, hey, if array of has to return how many times, which takes a number. I'm writing a plain pseudocode. It will be a function which takes a number and probably an integer function because it has to return how many times it appears. And you can be like for loop int I, or rather, you also need the array in the function. So go ahead and take the array as well. Go to this and I'll say, is this equal to this? Which was 1 previously will be updated to 2. Next, I'll go to this and the counter stays at 2 times it appears. Can I say it will be a function which takes a number. I'm writing a plain pseudocode. It will be a function which takes a number and probably an integer function because it has to return how many times it appears. And you can be like for loop int I, or rather, you also need the array in the function. So go ahead and take the array as well. Int function and probably array. Again, I'm writing the pseudocode, guys. Guys, just a break. Hmm. Oh my God! Wait, 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 wait. ये अपने घर से कॉल आया था. I hope I'm audible. Good. I'm just writing the pseudocode. Please focus on the logic. So can I say, probably I'll take a counter equal to 0 and I'll say for I will loop from 0 and I'll loop till the last of the array. You already know this. How do you loop in the array, right? And you will say, hey, if array of I is Is equal to number, number, then can I count plus say plus counter equal plus to plus counter plus plus. 1 and I can end this for loop and I'll say return counter and this will be my code. Can I say this? Yes, I can say this. Why does this work? Because it's very simple. If you're given a number 1, that number 1 is given over here and the array is given over here and you iterate through the entire array. What is 0th index? This is this. What is after this first index? This is this. And what are you doing? You're saying array of 0 equal to 1. Then you're increasing the counter. So eventually you will iterate through the entire array and the counter value will be updated at the end of the for loop. Once it is updated, you return the counter, correct? So in order to find how many times 1 appears in the array, what you can say is, hey, function, take 1 and take this particular array and tell me how many times it appears. And it will return you 2. In order to find out how many times 3 appears, you'll say, hey, function, take 3 and take this particular array and say how many times does 3 appear. And it does a linear iteration. It goes to every element and checks if it is equal and it counts it. And at the end of the day, it returns the count. Simple. So if I have to ask you, what is the time complexity? Can I say I'm running a loop for bgo of n times? And there are certain number of operations that we are doing, but we do not calculate that in time complexity. So can I say I'm running the loop for n times? Thereby the time that I'm taking in order to compute how many times a number appears is bgo of n. So for this, I will take bgo of n. For this, I will take another bgo of n. For this, I'll take another bgo of n. For this, I'll take another bgo of n. For this, I'll take another bgo of n. So can I say for 5 times, if I have to do 5 times, like these are 5 numbers. For 5 numbers, if I have to find how many times each of these numbers appear, can I say the time complexity is 5 into bgo of n? I can say. And imagine if I give you a lot of such numbers, like a lot of such numbers. If I give you a lot of such numbers and imagine there are q numbers
I give you q numbers, and for every number, you have to tell me how many times it appears. Can I say the time complexity will be q into n? Can I say the time complexity will be q into n? Because for every time you are taking a for loop and computing it, so thereby the time complexity will be q because there are q numbers, and for every time you are computing n, so the time complexity boils down to q into n. And this is something which might not be good if imagine q is very large. Just imagine I'm giving अरे बट मेरे को ये याद नहीं आ रहा, पता है कि एरो को इनिशियलाइज कैसे करते थे। you q to be 10 to the power 5. I'm giving you 10 to the power 5 numbers. And imagine I give you an array size. I give you a huge array of 10 to the power 5 size. Then what will happen? Then it will be big O of 10 to the power 5 because 10 to the power 5 numbers will be there. And the array size is 10 to the power 5 because it's a huge array. So the number of operations will be 10 to the power 10. And the number of operations is 10 to the power 10. How many time, how much time will it take? If you remember, I told you 10 to the power 8 roughly takes around 1 second. Most of the problems you'll find on DS algo will be taking 1 second or 2 seconds. So if I'm taking 10 to the power 10 operations, how much time will it take? It will take 1.1, 10 to the power 10 seconds will 1.2 take और approximately 100 seconds. How do I हाँ get that? Very simple. If 10 to the power 8 takes 1 second, then one operation will take अरे 1 हाँ second by 10 to the power 8. Then 10 to the power 10 operation will take 1 by 10 to the power 8 into 10 to the power 10, which is nothing but 10 to the power square, which is nothing but 100 seconds. So 10 to the power 10 will take 100 seconds, which is a lot of time. You cannot wait for 1.5 minutes for a program to execute. This is where something like hashing comes in. It's a technique which will help you to do it in a much faster way. So if I have to define hashing in extremely naive terms, what is it? It is something like pre-storing and fetching. This is what hashing is. Pre-store something and fetch when required. Let's understand this in depth. Now, this is an array. Okay. Now, imagine the problem. सो ही सेइंग कि जब हम समझो मेरे को कुछ आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मुझे आइडेंटिफाई करना है कि अ, इस पूरी एरे में 1 कितना है। सो व्हेन आई फाउंड कि 1 कितने हैं, आई तो मैं कैसे करूंगा बाय द वे, इसको मैं फॉर लूप लगा के करूंगा यूजुअली, है ना। हर एक एलिमेंट स्कैन करूंगा, फिर इफ केस लगाऊंगा, यहाँ पे एक काउंट वाला 0 रख दूंगा, और फिर काउंट अपेंड करूंगा अगर मेरी इफ की कंडीशन मैच हो गई तो। इफ माई नंबर इज इक्वल्स टू 1 एरे के आई में से, तो बस हो गया मेरा। बट वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत है कि इसको हर एक ये चेक करना पड़ता है लाइन। तो ये होता है टोटल n टाइम्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको n टाइम लगेगा, इसको n टाइम लगेगा, इसको n टाइम, और ये q टाइम्स होता है। तो हमारा ये प्रॉब्लम होगा q इंटू एन। तो इसको बेसिकली ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड वो बोल रहे हैं कि एक n मतलब होता है 10⁸ है ना, राइट? ऐसे कुछ बोला, वेट कहा गया है। हाँ, एक एक n हमारा होता है 10⁸ एंड वो लाइक 1 सेकंड में उतना पार्ट वो हो जाता है एग्जीक्यूट वगैरह। बट अगर समझो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा आ गया, जैसे अभी ये जो हमारा क्यू हमारा एक्स्ट्रा है ना, ये 10⁸ हो गया अभी। पहले अगर क्यू नहीं होता तो 10⁵ होता। तो अभी क्या है, 10 क्या, हाँ 10:5 अभी। तो 10:5 तो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड 10 है उसको तो ज़्यादा टाइम, उसको 100 सेकेंड लगेंगे। तो हमारा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सूट नहीं हो रहा बेसिकली। तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड नाउ टू हैशिंग। नाउ लेट्स सी। Much faster way. So if I have to define hashing in extremely naive terms, what is it? It is something like
pre-storing and fetching. This is what hashing is. Pre-store something and fetch when required. Let's understand this in depth. Now, this is an array. Okay. Now, imagine the problem statement states the array will at max have numbers till 12 or 15. Let's say 12. At max, it will have 12. What does it mean? Over here, you're saying 1, 2, 1, 3. So at max over here, it is 3. But imagine a problem statement where I state, I'll give you an array and the array at max will have 12. Over here, it is having 3 at max, but the array can have at max of 12. So what hashing says is, okay, I know I can have numbers from 0, 1, 2, 3 till 12. So what I will do is, I will create another array. Okay. Remember this. I'll create another array and I'll call this as hash array. And in this hash array, what I'll do is, I'll say 0, 1, 2. So what I'll do is I'll create an array of size 13. And I know the indexing starts from 0 and the indexing will go on till 12. And I'll assign everything as 0 initially. And this is something which I'll call as hash array. This is something which I'll call as hash Hashing. array, or you can call it as a frequency array Hashing. as well. Now, what I will do is, I will do some pre-calculation. Remember this. I will do some pre-calculation. बरं Now, what is this realize करो ना. pre-calculation? नीट नव्हतं It's असं. very simple. I go to the first number, which is 1, and I say, okay, you are 1. So I will go to the first index and I'll say, hey, can you just remember that I have 1, 1? So he will say, okay, I'll remember you have 1, 1. Next, I'll go to this 2. So it will come to this 2 and say, hey, can you remember I have 1, 2? He'll say, okay. Next, I'll go to this 1 and it will say, go to 1 and say that he has 1 more 1. So he goes to 1 and says, you have 1 more 1. So he says, okay, I know I have 2 1s. He'll go to 3 and say, can you go and remember you have 1, 3? He will do that. He goes to 2 again. He says, go and remember you have 1, 2. So 2 increases to 2. 2, 2. So apparently, the moment you have traversed for all the elements in the array, the hash array, if you properly observe, in one index, because 1 is the number representation, in 1 it states, I'm appearing twice. In 2 it states, I'm appearing twice. In 3 it states, I'm appearing once. And all the others are marked as 0 because they do not appear. So now, this is the pre-store that you have done. This is the pre-store. This is the pre-fetching that you have done. Now, what will happen? Now, you come over here and you say, hey, listen, how many times 1 appears? Now, you do not loop and find out how many times 1 appears. What you say is, hey, how many times 1 appear? I have done a pre-fetching. I'll go to 1 and I'll say, it appears twice. I get twice. For this 1, I go and say how many times it appears. And I'll get this value at hash of 1. Instead of iterating in the entire array, I say hash of 1 and it tells me 2. For this 3, I'll say hash of 3 and it will give me 1. For this 4, I'll say hash of 4 and it will tell me 0. For this 2, I'll do hash of 2, it will give me 2. For this 10, I'll do hash of 10, it will give me 0. For this 12, I'll do hash of 12, it will give me 0. So can I say I just did a single, pre-computation and that apparently solved all of my queries in one go? So if I have to code this up, can I say I'll first be given the size of the array. Imagine this is 5 size array and 1, 3, 2, 1 and 3. So given this array, then probably I'll give you the number of numbers for whom I require, how many times they appear. I tell you I need for 5 numbers. And the number is first I'll say how many times 1 appears. Next I'll say how many times, let's say 4 appears. Next time how many times 2 appears. Next time how many times 3 appears. Next how many times 12 appears. So 5 numbers for which I have to find how many times they appear. So this is the size of the array. This is the array. How many numbers, like how many queries are you giving? And these are the queries. 1, 4, 2, 3, 12. Tell me how many times 1 appears. Tell me how many times 4 appears. Tell me how many times 2 appears. Tell me how many times 3 appears. Tell me how many times 12 appears. So I need to take all of these input. So it's a very simple way. First n and then scene of n. Then you declare the array of size n.
and then you say for int I equal to 0, I lesser than n, I plus plus. Then you go across and say scene of array of I. Perfect. You've done this. What's the next step? You have to take the query. Let's first I'm taking up all the inputs. Okay. Scene of q. So you can run a while loop like q minus minus, and then you can say take me the number and scene of number. So this is what is the input. First the array, then the queries, and for every query the number. Now you need to tell me how many times the number appears. So this is where you do some pre-compute, and this is the fetch method. This is where you fetch. So can I say for pre-computation, I need hash. I need a hash. And over here, for simplicity purpose, let's take 13 because I know at max the size can be till 12. Whatever the problem states, if the problem states the maximum size can be till 10 to the power 5, then you will go across and say 10 to the power 5. If the problem states 10 to the power 6, you go across and declare it. Over here, I've kept it simple. I've said that maximum size will be 12. So I require a size 13 because in order to have the 12th index, I need a size of 13 because the last array index is 12. All of us know that. Now, the pre-computation was very simple. I will go like this to the array. This is the iteration of the array. Now, I know for array element, I have to go to that index and do a plus 1. So I say, hey, go to that index, which is array of I, because that is the index where I have to go. And I have to tell him, can you increase your value by 1? And he increases because previously it was 0. Now he will, for every number it goes to that index and says plus equal to 1. Once this is done, now I have my hash array ready. So if I go back to the iPad, can I say I have this particular hash array ready after the pre-computation? Because 1 by 0, now he will, for every number it goes to that index and says plus element. In order to have maximum to the power 6, you go across and declare it. Over here, I've kept it simple. I've said that maximum size will be 12. So I require a size 13 because in order to have the 12th index, I need a size of 13 because the last array index is 12. All of us know that. Now, the pre-computation was very simple. I will go like this to the array. This is the iteration of the array. Now, I know for array element, I have to go to that index and do a plus 1. So I say, hey, go to that index. To have the minimum size will be 12. So I require a size 13 because in order to have the 12th index, I need a size of 13 because the last array index is 12. All of us know that. Now, the pre-computation was very simple. I will go like this to the array. This is the iteration of the array. Now, I know for array element, I have to go to that index and do a plus 1. So I say, hey, go to that index, which is array of I, because that is the index where I have to go. And I have to tell him, can you increase your value by 1? And he increases because previously it was 0. Now he will, for every number it goes to that index and says plus equal to 1. Once this is done, now I have my hash array ready. So if I go back to the iPad, can I say I have this particular hash array ready after the pre-computation? Because 1, and similarly for this number, similarly different, but it's okay. Once the hash array is ready, you have the number, so you just fetch it. This is the number of times it appears, and you can just go ahead and do this. I'll go ahead and quickly run this and see if it is running fine. So if you see, these are the answers. How many times 1 appears? Twice. How many times 12 appears? 0. Depending on what is the maximum size of the array, you declare the hash. Now a question that might come up to your mind. Striver, in this you said the array could be having a max element till 12. So it is very obvious that you declare an array of size 13 because the last index then we will get as 12 and we can keep how many times 12 appears. But what if I tell you that the maximum array element can be till 10 to the power 9? Like it can have numbers till 10 to the power 9 or maybe 10 to the power 12 or maybe 10 to the power 15. What if they have larger numbers? Can we declare an array of size 10 to the power 9 plus 1? Because apparently that is what we are seeing. If there was an array of size at max till 12, we declared a size 13. So if the array has max element till 10 to the power 9,
Can we declare an array of size 10 to the power 9 plus 1? The answer to that is no, you cannot. The maximum size array that you can declare is 10 to the power 6 if it is of integer. Inside, very important, inside main, what does it mean? If I go back to the code, this is where you declare. If you're declaring it inside main, it can only go up to 10 to the power 6, like somewhere near about. You cannot declare something like 10 to the power 7. This will throw you segmentation fault. It will not be able to allocate that much memory. But, if you go across and declare it somewhere globally, which means over here, if I go across and declare somewhere globally, I can actually do it till 1e7, which is 10 to the power 7. So if you declare globally the array can go till 10 to the power 7 as well if it is declared globally. Like 10 to the power 7 plus 1 might also work. Near about 10 to the power 7, it will go. But if it is declared globally, very, very important. This is something which I'm talking for integers because we are dealing with hashing. For Boolean, yes, for Boolean, this value will be, if you're declaring a Boolean array, inside int main, you can go till 10 to the power 7. Globally, you can go till 10 to the power 8. You can run them and see. If you declare anything like 10 to the power 8 inside, yes, inside your int main, it is going to throw you a segmentation fault. So let's go into the code editor for integers because we are actually says 10 to the power 8 inside, yes, inside your int main, it is going to throw you a segmentation fault. So let's go into the code editor and imagine instead of 13 I say 10 to the power 7. Okay, and now let's try to run this and see if it is taking 10 to the power 7. So if you look at the terminal, it actually says there is a problem because the memory size is something which it cannot allocate. But the moment I reduce 1 0 and I try to rerun, you will see that this is actually running fine. Let's run this. You see it is running fine. And if I add one more 0 and I go across and declare this globally, you will actually see this is like, you don't need to give 0 because if you declare globally, everything is initialized as 0 instead of garbage values. So if you go over there, I declared it. Hey, what is the problem it's giving? Oh, shit. Let's run this. Hash is ambiguous because, okay, let's do double hash because the name is something which is already taken. Let's now run it. And you see it is working fine. If I declared it globally as 10 to the power 7, it did run fine. So this is something which I wanted to tell you. This is something which I wanted to tell you. If you are using array in order to do hashing, you can only go up to 10 to the power 6 inside a main or 10 to the power 7 globally, not beyond that. For something like 10 to the power 9, what will we be using? That is something which we'll be discussing in the later half of the video. So make sure you watch the video till the end. ओके सो हमने अभी ये पढ़ा रिगार्डिंग हैशिंग तो सो द थिंग इज कि जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे हमें रिपीटेशन और यहाँ पे स्टोरेज बचाने के लिए एंड टू प्रिंट ऑप्टिमल आउटपुट इन अर्ली वे हम हैशिंग यूज़ करते हैं इसका कोड देखो कोड पहले जनरेट क्या है कि सबसे पहले हम यूज़र से मांगेंगे कि तुझे भाई कितने डिजिट का चाहिए सॉरी कितने क्या लेंथ का तुझे एरे चाहिए फॉर एग्जांपल ही सेज 5 तो हम पहले इसका इनपुट लेंगे फिर हम एक एरे बनवाएंगे इजी है नॉट टू मच हार्ड आई बिलीव ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे अब देखो समझ मैंने पास लिया मैंने एक एरे बनाई अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि मुझे कितने क्वेरीज ये करना है इससे इंक्वायर करना है आर यू गेटिंग इट क्वेरी
क्वेरी क्या होता है कि मुझे इसे पूछना है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने पूछा एक, तेरे पास एक कितना है, तेरे पास दो कितने हैं, तेरे पास चार कितने हैं। और उसने बताया ठीक है यार ये मेरे पास इतने हैं इतने हैं इतने हैं। तो ये जो है ये है क्वेरी, मतलब द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आई आस्क्ड टू हिम। ठीक है, तो ये क्वेरी है। एंड उसके बाद फिर आता है कि अपना आउटपुट। हम्म हम्म उसके बाद हमारा आउटपुट आता है। मतलब आउटपुट इन द सेंस हम क्वेरी पूछेंगे, जैसे वन डाला टू डाला थ्री डाला, ठीक है। सो ये हमने बेसिक लूप बनाया एंड ये बनाया, ठीक है। मैं पहले ये खुद से करता हूँ। वेल लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट राइट नाउ। आई होप इट्स विजिबल। या इट्स प्रीटी मच। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट मेन में हम सबसे पहले से ये मांगेंगे कि भाई तुझे कितनी स्केलें बनानी है। एंड हम इनपुट मांगेंगे, फिर हम एक और एरे बनाएंगे उसी लेंथ के। अब हमने एरे तो बना दी, एरे बनाने के बाद हमें उसको फॉर लूप से खुद में प्रिंट भी कराना पड़ेगा ना। सॉरी यहाँ पर, सो ये हमारा इंट मेन का हुआ। अब हम दूसरा एक डिक्लेयर करेंगे एंड क्यू। यार हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसमें ही होगा क्या ये वापस। हाँ, तो ये सारा इंट मेन में ही चल रहा है, ओके फाइन। गुड। रिकर्जन से आदत लगे यार दूसरे फॉर्म बाहर देखने की। ओके तो हम करेंगे यहाँ पे। आई टेल यू स्पेस की छूट रही है क्योंकि तुम्हें कोड में पता है लॉल। मैं छोड़ भी सकता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फाइन। ये हम यूजर से क्वेरीज मांग रहे हैं, भाई तेरे को क्वेरी क्या है, कितने क्वेरीज है तेरी। फिर हम एक वाइल लूप चलाएंगे, यार वाइल लूप चलाने की आदत होनी चाहिए। वाइल आई एम माइनस माइनस है ना। हाँ, मैंने आई ग्लोबली तो डिक्लेयर किया नहीं। इंट आई माइनस माइनस क्या, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे है ना। हाँ यार, अभी हमें इससे नंबर भी तो मांगना है। क्या हटी, तो सोचा ही नहीं मैं। नंबर। तो हमने इसे यूजर से मांग लिया।
यूजर से मांगने के बाद हम क्या कर सकते हो? इंट आई माइनस माइनस है ना, इस टाइम तो मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ बस मैं इतना ही करूँगा, ओके, बेटर। अब हमारा इंट्रोड्यूस होता है हैशिंग का कंसेप्ट। हैशिंग हमें क्या बोलता है, देखो ये जो लाइन है ना, उसको मैं वापस स्क्रीनशॉट निकालता हूँ, क्योंकि ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये देख रहे हो? नाउ द थिंग इज कि ये जो हैश 13 है, इट इज द साइज। वही ब्रैकेट जीरो का कंसेप्ट मुझे पता नहीं, कि हमारी हैश की, जो हमारा वो है हैश, उसका हमें साइज कितना रखना है। ना हम साइज क्यों रख रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि कंसेप्ट यही है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। तो वो क्या करेगा, ये एक हैश एरे, इसको हम हैश एरे बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ अब समझो, मैंने एक मेरी ओरिजिनल एरे मैंने बताई 1 2 3 4, 1 और 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरे एरे में जाएगा, ये मेरे हैश एरे में जाएगा, ये बोलेगा 1, ठीक है। तो ये मेरे हैश एरे में जाएगा और बोलेगा, ये जो 1 का लोकेशन है उसको ये बोलेगा, भाई एक काम करना बस ना, तू इतना याद रख कि तेरे पास 1 है, तेरे पास एक एक है, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट 2 पे जाएगा, 2 के लोकेशन पे जाएगा, ये बोलेगा भाई तू इतना याद रख कि 2, तेरे पास एक 2 है। 3 के लोकेशन पे जाएगा, ये बोलेगा कि मेरे पास एक 3 है, सॉरी एक एक, ठीक है, 1 1 1 1, डोंट गेट कंफ्यूज। फोर्थ लोकेशन पे जाएगा, बोलेगा मेरे पास एक एक है, सॉरी एक 4 है। अभी जाएगा 1 पे, 1 पे जाएगा, ये वापस इसी लोकेशन पे जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं भाई, अब मेरे को एक और चीज़ याद आई, तेरे पास ना 2 एक है। एंड वापस 2 पे जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं भाई, तेरे पास एक 2 नहीं है, तेरे पास 2 एक है, सॉरी 2 2 है। आई होप इट्स क्लियर। तो ये हैश का कॉन्सेप्ट ऐसा है। सो नाउ द थिंग इज, सो इंट आई, ओके, सो अब ये तो हमने एक लूप इनिशियलाइज किया बेसिकली, एंड हैश एरे एंड +1। हाँ बेसिकली हम एरे को आगे पुश कर रहे हैं। वेट, इस लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है अभी, क्या लिखा है यहाँ पे, एरे, यहाँ पे लिखा है कि हैश के अंदर हमने अपने एरे डाली, ओके हैश के अंदर ही एरे डाल दी। यानी ये +1 हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम इसको अपेंड कर रहे हैं, राइट, लोकेशन को, कि हाँ तेरा ये स्कैन हो गया इस लोकेशन में जा, तेरा ये स्कैन हो गया इस लोकेशन में जा, यार ना इस। यार ये वो इंडेक्स ही होगा। नहीं यार, इंडेक्स थोड़ी ना होगा, इंडेक्स, इंडेक्स को ये क्यों एक से आगे, अच्छा, अच्छा ओके। हाँ यार, हमें इंडेक्स में ही तो स्टोर कराना है ना। ओके वेट, हाँ एंड एक और चीज़ है कि अगर इंटू, मैं लिखूंगा इसको अभी नहीं, लिखूंगा इसको मैं अभी नहीं। हम्म। सो हम प्री कंप्यूट कर रहे हैं, इसको हम प्री कंप्यूटिंग करेंगे, प्री कंप्यूटिंग वाले स्टेप। ये हमने एक साइज डिक्लेयर कर दी, एंड मेरे को इसका मीनिंग समझ नहीं आया अभी तक। वेट, ये इसको अलग रूप में डालेगा नहीं ना?
नहीं, ऐसा अलग ही फॉर चल रहा है। ओके, आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड अपना ये हैशिंग के लिए हम क्या कर रहे थे कि हैश कर रहे थे हम एरे को। और लास्ट में लिखेंगे कि सी आउट। वाह, इसने लैंग्वेज सोचने के बेटर। कौन सा सीन? व्हाट, लाइन 14? क्या बोल रहा है भाई तू? है? और वेट, ये भाई, हाँ यार, मैंने वाइल लूप हुई मैंने चलाई नहीं। हाँ यार, क्यों हो गया यहाँ पे, माय अपोलॉजीज। क्यों? क्योंकि हम, हाँ यार, ये भी एक डाउट आया मुझे भी कि हमने इसको उल्टा क्यों चलाया। What the fuck is scene not declare भाई? सीन तो कोड का पार्ट है ना मेरे भाई, इसे मैं डिक्लेयर क्यों करूँ? अच्छा यहाँ पे, अरे यार, क्यों ऐसा हो रहा है? सही तो है मेरे भाई। एक्सपेक्टेड बिफोर, क्या बात कर रहे हैं वाइल पे ना? अरे हाँ, मैंने रीडिक्लेयर कर दिया। ओके, गॉट इट। तो एरर 1 फिक्स हो गया। अब सीन वाला एरर मैं डिक्लेयर क्यों करूँ मेरे भाई? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरे को लिखना है, इंक्लूड आई स्ट्रीम। आई थिंक दैट्स इनफ। हो गया ना रन? तो हम बोलेंगे मेरे को, मेरे पास, मेरे एरे में है 4 नंबर। अरे यार, ये इधर वापस करो। मेरे एरे में है 4 नंबर। ज़्यादा स्पेस ले रहा है क्या? स्लो हो गया बहुत। ओके, तो 4 नंबर है, 2, 2, 5, 5। मैं इससे 3 डाउट पूछूंगा, एंड वो डाउट है कि मेरे पास 2 कितने हैं, मेरे पास 5 कितने हैं। चलो कोई ना। यार रुक जाए, इतना स्लो क्यों चल रहा है मेरे भाई? हैशिंग में इतना टाइम कैसे लग रहा है? ये बहुत स्लो हो रहा है यार, ये तो।
आउटपुट इतना वियर्ड आ रहा है, रुक जाएगा, दूसरा कंपाइलर देखना पड़ेगा। यार फोर्टशेफ का खुद का भी यार, मैं नेट का इशू है क्या? लाइव तो अच्छा से ही चल रहा होगा। कितना पैक। ओ अच्छा, वही मैं नेट का इशू है। अरे मेरा नेट ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो दिक्कत है। यार सब चालू तो है मेरे भाई, कैसे नहीं आ रहा नेट? मेरे फ्रेम ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। ओके, अब स्टेबल आ रहा है। अच्छा तो अच्छा, इनपुट तो ऐड करने पड़ेगा। 4 के अरे बनाएंगे हम। 2, 2, 5। हम इससे 3 क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे इसमें 2 कितने हैं, 5 कितने हैं, 3 कितना। 2 to Z एग्जैक्टली, कोड सही चल रहा है। हाँ, कोड शेप वाले में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कम ऑन। कोड शेप है ना, बस सेव नहीं होता, वो दिक्कत है। सो आई वुड से कि अभी के लिए हम इतना पढ़ेंगे, बाकी का हम स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे 9:30, 9:30 से मे बी 10:30 या फिर 11:30। आई फील वेरी मच एग्जॉस्ट, क्योंकि आज कॉलेज में भी मेरा रिकर्जन करके हो गया था। ऑल तो एफर्टलेस था, 1 मिनट कहा मैं। हाँ, कहा गया मैं, हाँ। ऑल तो बहुत ज़्यादा एफर्टलेस था, मतलब कुछ खास ऐसे वो नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। सॉल्व भी किया मैंने। तो या, सो अभी तो लिख लेता हूँ थोड़ा, लेट्स स्पेंड 5 मिनट्स ऑफ टाइम राइटिंग दिस। अभी क्योंकि मेरे को अभी 8 बजे खाना जाना, मैं 2 घंटे क्या करूँगा मेरे भाई? आई फील कि मुझे करना चाहिए, बट थिंग इज कि मैं मेंटली वो नहीं हो रहा अभी। फ्रस्ट्रेट हो गया, नहीं फ्रस्ट्रेट नहीं कह सकते, एग्जॉस्ट हो गया। ऐसा लग रहा है लाइक अभी फ्लो स्टेट आ गया, तो मन कर रहा है भाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बट फिर अभी लग रहा है वो मेरे काउंटर हो जाएगा। हा विनेश, तू काय करायचं रे? तू असं हळूहळूच करायचं ना, त्याचा तो टार्गेट ठेवायचा. येस, गूगल प्लेसमेंट माइंडसेट. ठीक है यार, लिख लेता हूँ, लेट्स सी। यार देख, खाना खाने के बाद क्या होगा पता है? यार देख, खाना खा के मैं आऊँगा 9 बजे। 9 बजे आऊँगा, उद्या दुपारी. हम्म. का काय? नाही नाही, संध्याकाळी नाही. हाँ ठीक है, तो क्या किया जाए? 9 से 10 स्ट्रीम कर सकता हूँ। नहीं देखो स्ट्रीम, ठीक है लेट्स सी भाई, देखो स्ट्रीम का पर्पस ये नहीं कि मैं फोर्सफुली बैठ के करूँ। आज अब मेरे को लग रहा है कि हो गया बहुत तो हो गया, क्योंकि भाई भाई माँ कसम भाई, कॉलेज में इतना फ्री टाइम था ना भाई, ये 1 हफ्ता ना मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ भाई अच्छे से, पता है? मजा आने वाला है। वतन वतन मेरे। 2 मिनट्स है भाई।
मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया वापस। पढ़ लेता हूँ। तो ये हमारा हैशिंग है। ओके, सो विद दिस गाइस आज की स्ट्रीम हम यही पे एंड करते हैं, क्योंकि आई हैव 1 घंटा मैंने कॉलेज में भी दिया था। एंड अभी जब मैं आऊँगा तो 9:30 बजे अपन 9 या फिर 9:30 बजे आउटलास्ट खेलते हैं। लेट्स सी उसमें प्रोग्रेस करनी है, ऐसे थोड़ी ना कोडिंग में करनी है। फाइन। विद दिस आज का हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ एनीवन इज वॉचिंग। लव यू।